Hi guys, welcome to my channel where I post art and crafts videos. So on today's video, we'll learn to draw two types of trees. So for the first one, I will roughly sketch the tree first, जो कि बहुत ही आसान है और आप ये वीडियो देख के आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. So for the bark, I'm going to color it with a brown watercolor. तो पहले मैं ब्राउन के एक शेड से पूरा पेंट कर लूँगी और उसके बाद ब्राउन के ही कुछ डार्कर शेड से मैं इसको थोड़ा शेड कर दूँगी. ब्राउन के एक बहुत डार्कर शेड से मैंने एक 4 नंबर की ब्रश की मदद से इसमें डिटेलिंग ऐड करनी है, जैसे कि रूट्स पे और जैसे बार्क में होता है ना टेक्सचर, वो हम ऐड कर लेंगे. और ट्री के जो ऊपर का पोर्शन है लीव्स के लिए पहले हम ग्रीन की ही एक लाइटर शेड से पूरा का पूरा कवर कर लेंगे और उसके बाद डार्कर से लाइटर शेड की तरफ शेड करेंगे नीचे से ऊपर तक. यानी कि पहले नीचे डार्क ग्रीन या फिर ब्लू लेना है, फिर उसके ऊपर लाइट ग्रीन और उसके ऊपर येलो से हम शेड कर देंगे. सब कुछ हो जाने के बाद एक वेट ब्रश की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो या फिर कुछ डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं और ब्लैक बॉर्डर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है. ड्राइंग कर लूँगी. पहले मैं ब्राउन ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद में अलग से इनकी लीव्स ड्रॉ करूँगी. लाइक स्केच पेन और वाटर कलर जो भी आपके पास है आप उसकी मदद से कलर कर सकते हैं. सो बहुत ही आसानी से मैं ये ब्राउन की मदद से इसका बार्क और फिर इसकी जो पत्तियां है उसको ग्रीन या लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन मिक्स करके करूँगी. आपको जो पसंद है आप वो कलर कर सकते हैं. लाइक अनलीश योर क्रिएटिविटी एंड पेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू.
चाहे तो पूरा ट्री को ब्लैक पेन की मदद से बॉर्डर कर सकते हैं. So this is how you draw trees in 2 easy ways, which are very easy, and please try at home. Comment, like and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you.